जहाक उपस्थापन करेंगे गुरु रजनीकांत महापात्र द्वारा प्रशिक्षित उदय संगीतायन नयागढ़ शिल्पी माने सहयोग रे तबलारे अनंत चरण साहू ऑर्गान रे रतिकांत त्रिपाठी एवं पैड रे अभिलाष मिश्र एवं परिचालना तथा निर्देशन रे विशिष्ट गुरु रजनीकांत महापात्र को एवं द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्री को आम स्वागत करुछु। वंदे उत्कल जननी गायन पर आपण मान को विनम्र निवेदन दंडायमान होई उत्कल जननी को सम्मान प्रदर्शन करेंगे। उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी चारु भाषमय जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी उन्नीस 1971 मसीह फूड एंड एग्रीकल्चर संस्था जोड़ा विश्व खाद्य संगठन तांकर गोटे प्रस्ताव रे पारित करथिले जे मार्च 21 को विश्व वन दिवस रूपे पालन करा जाऊ एवं ता विभिन्न स्तर रे राज्य एवं अन्य देश रे पालन हे आसुतला किंतु 2011 मसीह रे दैट वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एवं तार परवर्ती वर्ष नवेम्बर 2012 रे जातिसंघर साधारण परिषद रे एक प्रस्ताव पारित करा जाय कहगला जे मार्च 21 रे जोटा कि हमर विश्व वन दिवस हिसाब रे पालन ही आस्तुला ताको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करिया पे यूएन जनरल असेंबली रे एक प्रस्ताव पारित हला एवं सेही अनुसार प्रथम जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हला 2013 रु समग्र विश्व रे पालन ही आसुची आ सेही कड़ी रे आज हम 10म विश्व वन दिवस पालन करूछु। एई वर्षर जो थीम अच्छी बा विषय वस्तु बा फोकस रे जोटा रहउची सेटा होची फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जोटा को आम स्थायी उत्पादन एवं व्यवहार बोली ओडिया रे बुझी थाउ। एई जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन विषय रे जो आज आम 2022 रे चिंता करूचु
हुए तो 30 वर्ष तले से चिंता कौन वन विभाग बा राज्य सरकार भी ता विषय चिंता कर पार मन थी 1992 रे राज्य सरकार संपूर्ण भाव में फेलिंग बैन करथिले कारण से परिस्थिति बा से जो जंगल अवक्षय होता ताकू अटकैवा ताकू प्रतिरोध करने एंटायर जो आम स्टेट फॉरेस्ट्री ग्रीन फेलिंग उपर बैन करा जायतिला एवं ऑलमोस्ट अबाउट 13 वर्ष पर 2005 रे ताकू लिफ्ट करा जाय कि फेलिंग अलाउ करागला एवं सही समय रे बहुत परिवेशविद कि किसी एक्टिविस्ट सेमानकर विशेष आशंका थिला जे आपण फेलिंग बैन को लिफ्ट करचंती राज्यर समस्त जंगल नष्ट हो जिवो बोली किंतु आई एम हैप्पी टू शेयर दैट सिंस 2007 वर्तमान सुधा 15 वर्ष हेलानी आमर जंगल रो जो वृद्धि घटी ईयर ऑन ईयर द फॉरेस्ट कवर इन ओडिशा इज इंक्रीजिंग एंड दिस ईयर जोटा कि 2021 रे हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रे जो रिपोर्ट बाहर थिला सेतरे फर्स्ट टाइम वी हैव क्रॉस 33% ओनली इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर रे हमर तो आगरु 33% आगरु थिला किंतु 2021 रे हम केवल फॉरेस्ट कवर रे भी 33% रु अधिक 33.5% हमर जंगल रहिछि ता सहित अनुमानिक प्राय 3 जोटा हमर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट अछि सो द फॉरेस्ट कवर नॉट ओनली इज इंक्रीजिंग but also the dense forest is also increased in terms of hectare. Forestry, what operation, it is a scientific based management, by science based management. तो forestry रू production जदि वृद्धि करा न जीव ताहले तार forestry बा science बा कोनसी रो आवश्यकता रहिबा नहीं गोटे उपाय होची जे आमे जंगल रो कोनसी हार्वेस्ट करिवा नहीं एवं आमे व्यवहार करिवा नहीं that is do nothing or touch me not policy जाको कहउचंती. The other one is we will do everything for the forest. Forest productivity केमती बढ़ाइबा आ लोकंकर कंजम्पशन भी बढ़ाइबा सेटा को लोकं को फोकस को आनिबा पई एई वर्षर थीम जोटा डिसाइड हेची जे we must increase our sustainable production. And when we are talking of sustainable production विशेष करी भारत रे आ हम ओडिसा रे भी वर्किंग प्लान जोटा फॉरेस्ट the bedrock of forest management that is the basis of the sustainable production. हमारा समस्त ओडिशा रे जो राज्य होची सेटा वर्किंग प्लान प्रेस्क्रिप्शन अनुसार जोटा कि भारत सरकार अनुमोदन करछन से अनुसार काम होची. So we can proudly say all our forests in Odisha are sustainably managed. कारण 2014 रे जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड हमर तयारी छि जहार अनुसार हमर समस्त वर्किंग प्लान वर्तमान तयारी करा जाउची that the basis of that working plan code is sustainable management principles. एवं आज आमर डेट रे जो आमर 51 वनखंड अच्छी से प्राय 7 गोटी जो आमर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान होची और 44 वनखंड मध्यरु अनचार्ज्ड ऑलमोस्ट 39 फॉरेस्ट डिविजन्स वी हैव द अप्रूव्ड परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वर्किंग इन द फॉरेस्ट सेति आउ जो 5टा डिविजन आमर जोटा रही तार भी वर्किंग प्लान अंतिम स्थिति रे अछि जोटा कि कोरापुट करंजिया बालेश्वर भद्रक वाइल्ड लाइफ यही 4टा डिविजन रो फाइनल स्टेज रे अछि आ जोटा पारला खेमडी सेटा वर्तमान ऑलमोस्ट पीडब्ल्यूपीआर तार सरीची. सो वेरी सून वी होप दैट इन अनदर मंथ और 2 ऑल आवर फॉरेस्ट इन ओडिशा विल बी अंडर सस्टेनेबल प्रोडक्शन. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन देयर आर सर्टेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल व्हाट वी गवर्नमेंट वुड लाइक टू डू प्रोडक्शन इंक्रीज करिया पई अर्लियर इन 60s and 70s हमर फोकस थिला ऑन टिम्बर प्रोडक्शन. But now when we are talking of sustainable production, we are looking at all aspect of forest. जोथि पई कि हमर ए असंता वर्ष जो हमर कैंपार एपीओ होची सेतिर किसी हमें विशेष कार्यक्रम राज्य सरकार के तरफ निया हेची सेटा रोची हमर वन्य सिल्क जोथि कि हमें प्राय 73 गांव रे प्राय 11 कोटी रे प्रोग्राम करिया पे प्रोग्राम रखिछु. ता सहित आ गोटे स्वतंत्र पदक्षेप निया हेची जोटा कि मेडिसिनल प्लांट औषधीय वृक्ष ताकू किपरि जंगल रे वृद्धि करा जीवो सेति विशेष ध्यान दिए जाए से अनुमानिक प्राय 12 कोटी रो आमे इन्वेस्टमेंट पे प्रस्ताव दैछु सरकार को एवं से ए दीटी सहित गोटे स्पेशल जोटा हमर नुआ आरंभ करछु फॉडर एंड फ्रूट बियरिंग ट्रीज काइना हमर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे गुडाई जगह अनुभव होची जे फ्रूट एंड फॉडर अभाव रहउची जंगल रे ताकू किपरि वृद्धि करबा सेति भी हमर प्राय असंता वर्ष पे
आम स्पेशल प्रोग्राम रखीचु जो द्वारा कि जंगल जो प्रोडक्शन बढ़िबो नॉट ओनली दी टिम्बर प्रोडक्शन बट आल्सो दी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉरेस्ट को एक होल यूनिट नहीं कि आम प्रोडक्शन वृद्धि करने चेष्टा करूँ यही सहित वंस वी आर लुकिंग एट दी प्रोडक्शन साइड बा सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट दी अदर साइड इज कंजम्पशन कंजम्पशन रे आम जो जाए लोक डिमांड आम वृद्धि करवा नहीं आपण मैंने अनुभव करेंगे आमर जेहेतु वुड यूज कमी जाइए ओवर द इयर्स नाउ द प्लास्टिक्स एंड स्टील एंड ग्लास पर्टिकुलरली यही तीन टा जो वस्तु वुड स्थान ग्रहण कर नहीं जो प्लास्टिक हैज एंटर्ड आवर लाइफ सो मच दैट वी डोंट नो हाउ टू लिव दैट बर्तमान बहुत जगह जो जो कि 92 रे बैन ऑन फेलिंग रोला बर्तमान अपन देखिए बहुत राज्य में बर्तमान बैन ऑन प्लास्टिक चलानी प्लास्टिक बैन एंड द एफर्ट इज that wood is the most ideal material to substitute plastic whether in terms of bags आपण माने निजे भी अनुभव करथुए बर्तमान प्लास्टिक बैग रे जेतो यूज को रोका जाउची ता जगह हमर पेपर बैग्स आसी वेरी यूजेबल पेपर बैग्स उडा का आसुची ता सहित विभिन्न जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रे विशेष करी घर बा ऑफिस सब गुडा करे जोटा कि वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज टू ए मैसिव यूज ऑफ स्टील एंड ग्लास बर्तमान ता जगह भी वुड यूज करने बहुत जगह चेष्टा करा जाउची सेंट्रल पीडब्ल्यूडी ता सहित ओडिशा पीडब्ल्यूडी भी से पोर्ट रे परिवर्तन करके जमती वुड को यूज करा जाय परिवो सेथिपई भी से पॉलिसी डिसीजन बा गाइडलाइंस गुडा इश्यू करिसंती सो द बेसिक एफर्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट इज टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वुड बिकॉज वुड इज नॉट ओनली ए गुड बट आल्सो इट्स ए कार्बन सिंक सेथिपई सेटा हमर चिरा सब बेले प्रचेष्टा रहउची जे फॉरेस्ट जो प्रोडक्शन बाहर वुड ताको किपरि वृद्धि करबा ता सहित विशेष करी हमर फोकस रहउची जे जो वुड गुडा को ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया बाहर जो गुडा को विशेष करी राज्य सरकार प्राय 60 स्पेसीस रो जो ट्रांजिट परमिट फ्री करचंती विशेष आकाशिया हला यूकलिप्टस हला जो मान को लोकंकर स्मॉल टिम्बर रे यूज आसुची ताकू किपरि वृद्धि करा जीवो सेही पई आमे विशेष ध्यान दउछु एवं से ताहार किपरि लोक मान पाखरे पहुंचीबो लोक मानकर यूज बढ़िया पई अति निकट चलित वर्ष सरकार पुनी बैम्बूर आमर जो यूज थिला जो गुडा बैम्बू फॉरेस्ट गुडा वर्किंग बहुत जगह बंद हो जाइथिला ताकू सरकार वर्तमान विशेष कर अलाउ करचंती जे वन संरक्षण समिति जो गुडा करचंती से माने चाहिले तांकर व्यवहार पई एवं बिक्री पई भी बैम्बू फॉरेस्ट गुडा करे से माने हार्वेस्ट करि परिबे एवं तार जो टेक्निकल सपोर्ट रहउची सेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दबो या द्वारा हमर जो वीएसएस अछंती गाम माने करबा ग्राम कमिटी जो माने अछंती दे विल बी नॉट ओनली दे टेक्निकली अपग्रेडेड बट आल्सो तांकर जो डेली जो रिक्वायरमेंट रहउची इन टर्म्स ऑफ स्मॉल टिम्बर सेटा तांकर बाउंसरु से माने निर्धारित हिसाब रे मीट करि परिबे दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स व्हाट वी आर टेकिंग टू मीट द सस्टेनेबल production and consumption of the wood produce. I hope in the days to come, the forest department will rise to the occasion and our productivity of the Odisha forest will also increase. Before I conclude, I once again thank the State Forestry Awards, जो माने कि वर्तमान पुरस्कार प्राप्त करिया जाउछंती एवं ता सहित म राज्य सरकार को भी वन विभाग तरफ धन्यवाद देवी जे चलित वर्ष समानकर जो प्राइस मनी थिला ताको द्विगुणित करिसंती सेथि म राज्य सरकार को भी बहुत वन विभाग तरफ धन्यवाद दउची एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू ओडिशा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं जंगल बाहिनी मुख्य श्रीयुक्त शिशिर कुमार रथन को आम कृतज्ञता अर्पण करुछु विशेष भाव में राज्य स्तरीय विश्व वन दिवस उपलक्षे ए कार्यक्रम अभिप्राय एवं आभिमुख्य संपर्क में आम समस्त अवधारणा प्रदान करें आमे आपण मान रखीचु आज विशेष कार्यक्रम विश्व वन दिवस उपलक्षे एक स्वतंत्र वृत्तचित्र आम जीवन रेखा जहाँ प्रदर्शित होगा आपण मान
पाहाड़रू नदी आसे जेबे बही केते मोड़ पुणी केते जे बुलाणी जमी जंगल केते पशु पक्षी एठी चढ़ चंचल से आम जीवन रेखा आम पाई शुभ मंगल ताकू आमे जाड़ी पोड़ी काटी डाकी आणु जेते परा भव निरीहा पशु को करू जे शिकार करू नाही केबे आमे जे विचार सबुज अरण्य हेलाणी धूसर आम भविष्यत आजी अंधार दिने समय करिब विचार आसो आजी आमे शपथ करिबा हाथे रखी आमे हाथ जंगल रहिले परिवेश रहिबा आम हाते सुरक्षित असुजी बाधा जेते समस्या करिबा जे समाधान प्रकृति हसीले आमे हसीबा हसीबा जगत जाना विश्व वन दिवस उपलक्षे यही स्वतंत्र वृत्तचित्र आपण मान द्वारा गृहीत होइछि अनेक अनेक साधुवाद देउछु या परे परे ओडिशार प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं मुख्य वनप्राणी तत्वावधारक माननीय श्रीयुक्त शशिपाल महोदय को निवेदन करिबो उद्बोधन पाई। Respected ACS Madam, PCCF and HOF, Shri Gopi Singh, my colleagues from the department, friends from media, and ladies and gentlemen, समस्तों को मु नमस्कार जनाउछि। सर्वप्रथमे आज विश्व वानिकी दिवस रे आपण मानकु अभिनंदन जनाउछि, शुभेच्छा जनाउछि। बंधुगण आज जदि थीम जिते बड़े मुझे देखुची फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से हठात जिते आम चाकरी आरंभ करूँ 90s बेल को से समयटा मन पड़ जाउची। से समय रे कौन होतिला आपण माने जी मोर वर्किंग कलीग से समय अच्छा से भल भाव अनुभव करछंती
सेतेबेले जंगल ऊपर बहुत प्रेशर रहउथिला काठ पई जाळनी काठ पई सबु बळे डिपार्टमेंट रो मैक्सिमम एनर्जी एफर्ट जाउथिला ताकू केमती कंट्रोल करिवा केमती चेक करिवा किंतु बहु परिमाण रे सफलता मिलु नै थिला किंतु तापरे जेमती जेमती समय पारिगला सेतेबेले जहा आपण माने भी जे सेतेबेले देखिचंती का हठात रे 200-300 लोक पळे आसीबे मारणास्त्र धरिकरी आसीबे माड़गोल लागुथिबो सब बेले केते हमर भाई माने डिपार्टमेंट रु तांकर जीवन हराई छंती जंगल सुरक्षा पई से समय रे किंतु जेमती जेमती समय टिके पास हैला हमर 21st सेंचुरी आरंभ हैला परिस्थिति टिके बदलिला जेमती आपण हमर पीसीसीएफ एंड ऑफ कहले वर्तमान जो हमर मॉनिटरिंग होउची फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तरफ रु प्राय 10 वर्ष हे गलानी 5टा रिपोर्ट जो रिपोर्टटा की प्राय 2 वर्ष को गोटे थारे आसे गत 5टा रिपोर्ट रे आम राज्य रे जंगल वृद्धि पाई चली छी परिस्थितिटा पूरा चेंज हे गला जहां हम 80s 90s रे जहां अनुभव करथिलु सेटा वर्तमान बदली गला गोटे दृष्टि रु कहले हमें सस्टेनेबल लेवल को पहुंची आसिलु कहले भी चलिबो काहे कि हमर जंगल परिमाणटा जते की अछि सेते की रहला कि ताटू वृद्धि पाउची आउ कमु नाही जते की ता भितर हम एक्सट्रैक्ट करूछु ताटू बेसी हम ऐड करूछु सो हमर जा कैपिटल अछि सेटा आउ कमु नाही जदि हमें ताकर कारण विषय चर्चा करिबा ताले जेमती हमर पीसीसीएफ एंड ऑफ कहले गोटे मुख्य कारण है सब्स्टिट्यूट गुड़ाका प्लास्टिक स्टील ये सब जिनस गुड़ाका जो आगु सब काठ व्यवहार होता ताकू रिप्लेस करदेले जोटा कि आमर पर्यावरण पई एते भल नाही एनवायरनमेंट फ्रेंडली नाही आ गोटे जोटा मुख्य रीजन ये हमर ये स्टेज आसीबा पई अछि सेटा होछि हमर राज्य सरकार कर जहा केते गुड़ाका नीति रहला आपण जदि 80s 90s कथा चिंता करिवे सेते बेले लोक पाखरे जो गां गंडा थिले जो जंगल पाखरे लोक रहू थिले तांको पई लाइवलीहुड थिला बड़ इशू बहुत लोक पई लाइवलीहुड किछि इश्यूज लाइवलीहुड गुडा का पाउ न थिले बाध्य हेकरी तांकर सुजोग नै करी जो काटा माफिया गुडा का थिले से लोक मानको प्रलोभन देई करी जंगल काटिबारे लगाउथिले ताटू काठ नै करी व्यापार करथिले लाभ पाउथिले ए लोक गुडाका प्रकृति रे से चोरी कामटा करबा को चाहू नथिले किंतु बाध्यतामूलक काहे कि तांका पाखरे आ चलिबा पई किछि साधन नाही बोले सेटा करबा को बाध्य होथिले किंतु वर्तमान आपण देखंतु जेमती जे स्कीम गुडाका राज्य सरकार जोटा इंट्रोड्यूस करला जो थरे कि लोक मानको जेमती एमजीएनआरजीएस हला जोठी भी चाहिले लोक ता पई रोजगार पाई परिवे जेमती हमरा बिजू पक्का घर योजना हला बिजू पक्का घर योजना नाले आगु जो कच्चा घर हेले आपण जानछंती सब वर्ष ताक पई रिपेयर दरकार पड़े काठ बल्ली दरकार पड़े जाटी माटी दरकार पड़े सब जिनस गुडाका दरकार पड़े सो सेते पक्का घर हे गेला हे जिबारु से दरकार गुडाका आउ पड़े नाही सेटा भी हमरो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रे साहाय्य हुए तापरे आउ गोटे बड़ो कारण जोटा हमरो रहउथिला जळ काठ बाध्य रे जते भी लोक थिले गां रे तांतो टाउन रे इवन ढाबा आपण देखंतु ठेला देखंतु जते कि सेते बेले देखुथिबे समस्त जाळनी काठ ऊपर निर्भर करथिले वर्तमान आपण जदी देखिबे आपण आओ को ढाबा ठेला ए जाळनी काठ व्यवहार करबाटा देखिबे नाही सेम परिस्थिति हमरा जंगल पाखा पाखरे जो गां गोडा को अछि सेतरी भी हेछि जो हमरा जो कुकिंग गैस सप्लाई स्कीम गुडा का अछि से स्कीम जोगु बहुत गुडा का काठ जाळनी काठ रिप्लेस हे गलानी जाळनी काठ एक्सट्रैक्शन हम जंगल पई बहुत ही हानिकारक होथिला काहे कि से सब छोट छोट जो पोल क्रॉप थिला जोटा कि हमर विख्यात जो गछ गुडा का थिला ताकू बेसी लोक काटु थिले जेमती आपण आगरो आपण माने समस्त लक्ष्य करथेबे आगरो जते बेले भी जो रोड रे गले जो पटे गले लोक मिली छी किंतु जहा मो पूर्व वक्ता भी कहले
जो हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली जिनस गुड़ाक जो आम रिप्लेसमेंट हिसाब रे वुड सब्स्टिट्यूट हिसाब रे जो आम बर्तमान व्यवहार करने लगिछु ताकू आम औथरे दूरेबा को पड़ो आमको औथरे काठ व्यवहार अधिका करने को पड़ो तापाई आमर प्रोडक्शन जमती आम जो जंगल परिमाण बढ़े चलीछु आउ ताकू टिके अधिका परिमाण रे बढ़ाइबा को पड़ो ता सांगे सांगे आमको वर्तमान जंगल परिमाण बढ़िवा एटा एक्चुअली ग्रीन कवर बढ़िवा गछ संख्या बढ़िवा सेटा ठीक अच्छी किंतु बहुत गुड़ाक आमर उजड़ा जंगल अच्छी तार पुनर्धार पाई भी हमको दरकार अच्छी आमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वर्तमान इट इज नॉट जस्ट collection of trees, it's not just assemblage of trees, it has to be a full fledged ecosystem सेठी जहाँ आमर जो भी जैव विविधता रहे सब प्रकार जैव विविधता जमती फॉरेस्ट इकोसिस्टम रे रहिबा कथा सेटा रखिबा दरकार सो वर्तमान आमे जो स्टेज रे पहुंची छु जो सफलता आमे हासिल करूछु से मैनग्रोव फॉरेस्ट हो कि से हमारा अदर फॉरेस्ट हो सेटा को हमको आगे को नेबो को पड़िबो हमको जंगल गुड़ा को पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम हिसाब रे जो थरे की सब प्रकार स्टेज रो गछ थिबो जोठी की जीवजंतु थिबो जोठी की बायोडाइवर्सिटी रो भलो असेंबलीज थिबो से गुडा का हमको अचीव करबा को अछि सो वर्तमान हमको सेकंड जनरेशन जो हमर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट इश्यूज अछि हमको से दिगरे आउट जोर सोर रे काम करबा को पड़िबो सो दैट खाली हमर जंगल परिमाण बढ़े नहीं क्वालिटी ऑफ जंगल जोटा अछि सेटा भी इक्वली इंपोर्टेंट अछि हमें ताकू भी इक्वली गुरुत्व देकरी बढ़ाइबा को अच्छी सो मु आशा करुच्ची जहाँ भी आमर भाई माने जंगल रे काम कर डिपार्टमेंट रे खटुछंती हमको लोकल कम्युनिटी माने जोटा की साहाय्य कर प्रेस एंड मीडिया जोटा की से विषय सचेतनता आनिबा पई चेष्टा सब बेले करुछंती से माने एमती मिलित उद्यम करथिबे आमे आसंता किछि वर्ष भितरे जहाँ हमारा आइडियल सिचुएशन आमे नंबर हिसाब रे जेमती पीसी साहब महोदय कहले नंबर हिसाब रे आमे 33% जंगल ट्रीज आउटसाइड छाड़ी करी जंगल खाली हमर जो नेशनल पॉलिसी हिसाब रे 33% रहबा कथा सेटा आमे ऑलरेडी अचीव करिछु सो वर्तमान हमर मोर फोकस विल बी ऑन क्वालिटेटिव थिंग्स ताकू जहाँ प्रकृति रे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हिसाब रे जेमती डेवलप करबा कथा सेटा पई मोर दृढ़ आशा आम समस्ते मिसिकरी से दिगरे काम करले आम एथरे भी सफलता हासिल करिवो पुणी थारे आपण मानको अभिनंदन जणाई करी मो वक्तव्य शेष करूची धन्यवाद ओडिशार प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी मुख्य वनप्राणी तत्व बधारक माननीय श्रीयुक्त शशिपाल महोदय उत्साहप्रद संबोधन पर आम कृतज्ञता अर्पण करुछु यह परे मंच मंडन करिथिबा वरेण्य अतिथि कर कमल दुई गोटी स्वतंत्र पुस्तकर उन्मोचन हेब प्रथमे आम अनुरोध करिबु हाइलाइट्स ऑफ फॉरेस्ट्री सेक्टर 2022 यार आनुष्ठानिक लोकार्पण करिबा पई आम निवेदन करिबु मुख्य अतिथि एवं मंच मंडन करिथिबा सम्मानित अतिथि वृंद को हाइलाइट्स ऑफ फॉरेस्ट्री सेक्टर विश्व वन दिवस उपलक्षे ओडिशा सरकार जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत होइथिबा ए पुस्तिका हाइलाइट्स ऑफ फॉरेस्ट्री सेक्टर 2022 आनुष्ठानिक पाठकार्पण होउछि आमे अभिनंदन जनाउछु परे परे साइटेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट्री अवार्ड विनर्स 2022 जो माने चलित वर्ष स्टेट फॉरेस्ट्री अवार्ड विनर से विशेष भाव में अवदान को नहीं एक पुस्तिकार प्रकाश पाई जार आनुष्ठानिक पाठकार्पण लोकार्पण करुछन्ति वरेण्य अतिथि बंधुगण आज विश्व वन दिवस उपलक्षे राज्य सरकार तरफ स्टेट फॉरेस्ट्री अवार्ड 2022 प्रदान उत्सव वर्तमान समाहित हेब एवं वरेण्य अतिथि द्वारा संबर्धित हेबे चलित वर्षर स्टेट फॉरेस्ट्री सम्मान रे विभूषित हेबाकु जाउथिबा विशिष्ट वन सेवाधारी अधिकारी एवं कर्मचारी आमे सेमानकु
स्वागत करुछु प्रथमे श्रीमती जयश्री मुर्मू फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर देवगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन जयश्री मुर्मू को आम अभिनंदन जणाइबु। श्रीमती जयश्री मुर्मू रेंज ऑफिसर बारकोट रेंज ऑफ देवगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन has done excellent job in the field of forest protection, afforestation and wildlife management. She was successful in arresting the accused person by utilizing the pictures captured in the camera trap. श्रीमती जयश्री मुर्मू को आमे अभिनंदन जनाऊँ। जयश्री मुर्मू को जे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बारकोट रेंज देवगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन आज एठारे संबर्धित होउछन्ति। अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँ जयश्री को। परे परे आमे श्री सिद्धार्थ शंकर साहू फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बरमपुर फॉरेस्ट डिवीजन श्री सिद्धार्थ शंकर साहू आम ये कही रखिबू जो माने संबर्धित होउछन्ति समस्त को 10,000 टंकार अर्थराशि सहित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन एवं मेडल प्रदान करुछन्ति वरेण्य अतिथि। सिद्धार्थ शंकर साहू फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर खलीकोट रेंज has been showing outstanding performance in forest protection, joint forest management, afforestation activities, wildlife protection and management during his tenure in Khalikot range of Barampur Forest Division. He has contributed significantly to the development of wildlife habitat, especially in the case of black buck. श्री सिद्धार्थ शंकर साहू को आम अभिनंदन जनाऊँ। परे परे स्वागत करिबु श्री अनंत चरण परिडा फॉरेस्टर केउंझर वाइल्ड लाइफ डिवीजन श्री अनंत चरण परिडा। श्री अनंत चरण परिडा फॉरेस्टर has worked with full devotion in different ranges of Keonjhar Wildlife Division. He gave his best effort in relocating 95 families in first phase and 75 families in second phase from different villages of Hadagad Wildlife Sanctuary. अनंत चरण परिडा फॉरेस्टर केउंझर वाइल्ड लाइफ डिवीजन रो आमे तंको अभिनंदन जनाऊँ। एवं परे परे श्री धोबा रणा टिटलागढ़ डिवीजन फॉरेस्टर टिटलागढ़ केएल डिवीजन देवगढ़ रेंज श्री धोबा रणा फॉरेस्टर इन देवगढ़ केएल रेंज of Titlagarh KL division has done excellent work in the field of production and processing of kendu leaves. Because of his sincerity and dedication, he was able to achieve a very high value of average sale price. This is a great indicator of quality processing, binding and bagging of kendu leaves. आमे श्री धोबारणा आपण मानकर करताली मागी नेबू फॉरेस्टर टिटलागढ़ डिवीजन एवं देवगढ़ रेंजर। परे परे श्रीमती कल्पना कुमारी प्रधान फॉरेस्टर आस्का रेंज घुमुसर साउथ डिवीजन फॉरेस्टर ऑफ घुमसर साउथ डिवीजन श्रीमती कल्पना कुमारी प्रधान has achieved great performance in the field of forest protection, wildlife management and joint forest management. Due to her sincere efforts, the survival percentage in the plantation raised by her during the current year is 100%. She was also responsible for rescue and release of 5 number of black bucks. हमें श्रीमती कल्पना कुमारी प्रधान को बधाई जनाऊँ। परे परे श्री रंजन कुमार जीत फॉरेस्टर फ्रॉम बडरमा रेंज एंड बामरा डिवीजन Wildlife, Sri Ranjan Kumar Jeet, Forester of Badrama Wildlife Range under Bamrat Wildlife Division, is an active, dynamic and diligent, obedient and dedicated forest staff, and he has his effort and contribution in the restoration of the forest and in the participation and coordination in various wildlife census programs. आमे श्री रंजन कुमार जीत को बधाई जनाऊँ ये सम्मान लाभ करिथिबारु। परे परे श्री शिवानंद लेंका फॉरेस्टर फ्रॉम बालीमेला रेंज and Malkanagiri division. Sri Shivananda Lenka, forester, is a sincere, hard-working forest staff. He has recently rescued 1 crocodile in the village Sadasipur and 1 sloth bear in the village MV20. He has been instrumental in raising different variety of rice and forestry species in the private fields of local villages in Balimela NAC. Sri Lanka has carried out successful plantation under various schemes like Urban Economic Avenue Plantation and Miyawaki Campaign. आमे श्री शिवानंद लंका को बधाई जनाऊँ। परे परे श्री शिवनारायण माझी
Sri Shivnarayan Maji, forester from Kumna Wildlife Range and Sunabeda Wildlife Division. His contribution in the field of protection, anti-smuggling measures and anti-poaching squad has been commendable. He has been conducting regular foot patrolling and preventing forest fire inside the sanctuary. Shivnarayan Maji को कोमना वाइल्ड लाइफ रेंज एवं सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ डिविजन फॉरेस्टर को आमे बधाई जनाउछु। परे परे श्री आनंद बिहारी स्वाई, फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम बनगोमुंडा रेंज and Balangir Forest Division. Anand Bihari Swai, Forest Guard of Balangir Forest Division, contributed a lot towards protection of the forest through awareness in different forest fringe villages. He is found to possess scientific approach in plantation activities and has raised many successful plantations. In the field of wildlife management, he was responsible for rescue and release of 1 barking deer and 1 golden eagle. And he has been especially trained in camera trapping for tiger and other wild animals. Sri Anand Bihari Swai को मैं अभिनंदन जनाऊँ परे परे Sri Deepak Ranjan Patnaik, forest guard from Brahmuni Gaon, Baliguda Forest Division. Sri Deepak Ranjan Patnaik, forest guard of Baliguda Forest Division, has done very good work in the field of forest protection, wildlife management, and he has ensured regular patrolling in his area, as a result of which the wild animals have got complete protection from poachers. He was also responsible for rescue and release of 1 pangolin and 1 spotted deer. Ame Sri Deepak Ranjan Patnaik को अभिनंदन जनाऊँ। Sri Naresh Kumar Sethi, forest guard from Kaptipada Range and from Baripada Forest Division. Sri Naresh Kumar Sethi, forest guard, has been doing excellent work in Similipalo Tiger Reserve area. Because of his techno-savvy attitude, he has produced many videos on Anukampa app, Census app, OFMS app, which have proved highly beneficial to the forest department. Because of his persuasion with the members of Scout VSS, 13 country-made guns have been surrendered by the poachers of the area. हमें श्री नरेश कुमार सेठी, फॉरेस्ट गार्ड, बारीपदा फॉरेस्ट डिवीजन को अभिनंदन जनाऊँ। परे परे श्री प्रकाश सरकार, फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम देवगाम रेंज, नवरंगपुर फॉरेस्ट डिवीजन. He is a sincere, hard-working and disciplined worker, and encroached forest has been freed from encroachers by Sri Sarkar, where afforestation activity has been taken up. Supply of LPG gas under Ujjola scheme to VSS members was a great effort by which pressure on natural forest has been minimized. हमें श्री प्रकाश सरकार को फॉरेस्ट गार्ड नवरंगपुर फॉरेस्ट डिवीजन को अभिनंदन जनाऊँ। परे परे सुश्री पुष्पांजलि नायक, फॉरेस्ट गार्ड ऑफ रायगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन of Patraguda range, is a sincere, hard-working and disciplined worker. He has raised very good plantation in different schemes. The survival percentage in the plantation varies from 92 to 98%. Regarding her performance in the field of forest protection, it is noted that she is responsible for 5 number of PR cases, 113 number of OR cases, and seizure of large quantities of timber, bamboo, and firewood. हमें सुश्री पुष्पांजलि नायक, फॉरेस्ट गार्ड, पात्रगुड़ा रेंज एवं रायगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन को अभिनंदन जनाऊँ। सुश्री रूपाली पृष्टि, फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम खुंटुनी of Atgad Forest Division. Ms. Rupali Prushti, forest guard, has put up a great performance in detection of large number of forest offence cases. She has successfully conducted many cases of house search and effected recovery of seized materials. And she has been instrumental in taking anti-depredation measures on wild elephants coming from neighboring forest areas during the crop season and managing man-animal conflict during the period. Because of her sincere efforts, there was no casualty of wild elephants and human beings. आमे अनेक अनेक बधाई जनाऊँ। आठगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन रूपाली पृष्टि को परे परे श्रीमती सबिता साहू, फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम बडमाल ऑफ रेडाखोल फॉरेस्ट डिवीजन. Srimati Sabita Sahu, forest guard of Badmal range of Redakul Forest Division, has done very good work in the field of forest protection, wildlife management and joint forest management. She participated in large number of forest raids and arrest of 8 number of accused persons.
She has done great work for forest fire mitigation and conducted large number of awareness meetings for prevention of forest fire. श्रीमती सविता साहू को आम बधाई जनाऊँ रेड़ाखोल फॉरेस्ट डिविजन सहकर्मी को श्री शिवराम सावत फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम देवगिरी रेंज एंड पारालाखेमुंडी फॉरेस्ट. He has done very good work in the field of forest protection, wildlife management and joint forest management. He is very good in catching snakes and he has utilized this ability to remove and rescue snakes from the houses of common people. He also participated in large number of forest raids resulting in seizure of JCB, tractor, tipper, etc. शिवराम सावत को अभिनंदन जनाऊँ. परे परे सुश्री सिनिस्मिता मराई, फॉरेस्ट गार्ड from Barkot Range, Devgarh Forest Division. Ms. Sinismita Marai, Forest Guard of Devgarh Forest Division, has done very good work in the field of forest protection, wildlife management and joint forest management. She participated in number of forest raids and arrest of number of accused persons. Her performance in the field of afforestation has been very good and the survival percentage in the plantation raised by her is above 95%. Ms. सिनिस्मिता मराई फॉरेस्ट गार्ड को हमें अभिनंदन जनाऊँ. परे परे श्री सुनील रंजन राउतराय, फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम कनिका वाइल्ड लाइफ रेंज, राजनगर वाइल्ड लाइफ डिविजन. इज अ यंग डायनामिक and highly enthusiastic frontline staff who is an asset for the forest department. He has been instrumental in adopting new technological initiatives like DGPS mapping of forest areas, OFMS module for fieldwork execution, camera trap installation for wildlife monitoring, intensive use of patrolling and ecological app for enforcement and wildlife estimation activities. से सुनील रंजन राउतराय फॉरेस्ट गार्ड को राजनगर डिवीजन रे आमे बधाई जनाऊँ. परे परे श्री शुभेंदु भूया, फॉरेस्ट गार्ड, शिंकोल बीट, हिंदोल रेंज, ढेंकानाल फॉरेस्ट डिवीजन. He is a very sincere worker and because of his sincere efforts, 20 number of OR cases, 30 number of UD cases related to timber and 15 number of OR cases and 29 number of UD cases related to wildlife have been booked by him. He is also a very good sports person. आमे स्वागत करूँ श्री शुभेंदु भूया को ढेंकानाल फॉरेस्ट डिवीजन रे आज संबर्धित होइथिबारु. एवं परिशेष रे श्री उमाकांत साहू, फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम बलांगीर केएल फॉरेस्ट डिवीजन. Sri Umakanta Sahu, Forest Guard, is an excellent worker in the field of production and processing of Kendu leaves. Because of his sincerity and dedication, he was able to achieve a very high value of average sale price. This is a great indicator of quality processing, binding and bagging of Kendu leaves. This also reflects the high level of trust reposed by Kendu leaves purchasers in the ability of Sri Umakanta Sahu. आमे समस्त संबर्धित अधिकारी मानकु विशेष भाव रे आमे कृतज्ञता जनाउछु एवं अभिनंदन जनाउछु सेमानकर उपस्थिति पई. एवं एहा परे परे आमे अनुरोध करिबु आम सहित संयुक्त अछंती मुख्य अतिथि भाव रे ओडिशा सरकार जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग रा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर मोना शर्मा महोदय जहांकर मार्गदर्शन रे विभाग सफलतार गोटे पर गोटे सरणी को अतिक्रम करी गोटे पर गोटे पाहच को अतिक्रम करी आगुसार होईछि. माननीय डॉक्टर मोना शर्मा महोदय को निवेदन करिबु आसर को संबोधित करिवे राज्य स्तरीय वन दिवस विश्व वन दिवस उपलक्षे ए समावेश रे. आजिर उत्सव रे उपस्थित समस्त अतिथिगण मानक मोर शुभेच्छा मोर अभिनंदन. आम बहुत खुशी रो कथा अछि. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस that Odisha has 33% of the geographical area under forest covered. The national average is 24%, and as a country, we want to make it as 33%. So in the latest survey, the forest, we have reached the milestone of 33% of the geographical area as the forest area, which is very good. Secondly, we have the fourth largest forest area in the country. After Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Odisha has the fourth largest forest area. The mangrove forests of Odisha are very rich in biodiversity. And the mangrove area is less, but the mangrove biodiversity is very, very rich. And in the last survey, last report which was released, we have added 8 square kilometers of mangrove in our
in our state, which is much more than achievement of any other state. And we are all aware that these mangrove are the best protection against the cyclone. So the forest, the rich forest that we are having are not only adding to the rich biodiversity, wildlife, but they're also protection to us against the climate change. They mitigate the adverse effect of the climate change. And even in terms of the carbon sinks, Odisha is at number 4 in terms of the carbon sinks in the forest. So all these things have been possible because of the hard work done by each and every one of you with the support of the community. Odisha was a pioneer state to introduce joint forest management, and it has given us very good results despite the constraints. Under the transformative agenda of the state, under 5T, the state has decided to take the JFM, joint forest management, to the next level. So when we are talking of the next level, I चाहूँ छु कि जो जितने JFM माने अछंती, we will increase the number of JFMs. We will also increase the area which is being managed by them. As of now, about 25% of the forest area is being managed by the JFMs. We will make it double in a time-bound manner, and we will also try to see that we convert our open forests into moderate and dense forests by associating the JFMs in the process. The second priority for the government is to give the livelihood support. This has been possible because of alternative livelihoods, alternative sources of materials available to the people. So the pressure on the forest has come down, which has been reflected in the what PCF said, PCF wildlife, and we all know also. So the pressure on forests have come down. So we will also give much more livelihood opportunities to the local communities. And for this, we will have, under the OFSDP project, we are already doing a lot of activities. But in addition, we will work closely with Mission Shakti and also with the SC/ST department. Now, the SC/ST department is working out a scheme for the minimum support price for the minor forest produce. So the role of the forest department will be to increase the production and productivity of the minor forest produce. So we have a key role to play when we are talking of the livelihood support to the local communities. So forest department has got a key role to play, and I've got no hesitation in saying that all of you have been doing excellent job, excellent work in terms of protecting the forest, conserving and doing the development work. I would like to say 2 more things since the temperatures have already started rising. So along with the celebration, we are aware of the huge responsibility on us for prevention of forest fires. So I would like to compliment my field officials and all the senior officers for the alertness with which they have been working, and the regular interaction that we are having with the community, whether the Panchayati Raj institutions, the SHGs, the local groups, NSS volunteers. So I'll appeal to all my officers and the field functionaries to continue this interaction with the community in a very, very aggressive manner so that we prevent the forest fires. And in addition, as we have been doing, we'll continue to take immediate action as and when we receive the fire alerts from the FSI. So I appeal to all officers to be as alert as we are and ensure that we minimize the incidence of forest fires, and we also take timely action as and when they are reported to us. The second important action point for us right now is the soil and moisture conservation activities. As you are aware, this is a working season, and today we get a lot of funds not only from CAMPA but also from NREGA, from DMF, from AMBETSI, and many other schemes. And this is the right time. So I'll appeal to all my officers, my functionaries, who have been doing excellent work. In fact, when I was giving the award, it was so inspiring to hear that all of them have worked in different fields and done excellent job. What 5T that we talk about, they are implementing that 5T at their level. So we should make the best use of funds available to us under these ongoing schemes. We will use them effectively and efficiently to see that we conserve as much of water as possible, and that will definitely lead to the improvement in the forest growth. I congratulate all the award winners once again for their exceptional work, not only for wildlife, forest, but also for the Kendu leaf, which is a very important sector in our state. It gives employment to the poorest of poor during the lean period, and we give good, since we are processing the Kendu leaf, whatever profit is generated, we give it back to the pluckers and the people who are working in the field of Kendu leaf.
I'm sure that all of us individually and collectively will continue to strive for excellence to preserve, to protect, and to develop our forest, and making the communities a partner in that process. Thank you very much. Vande Utkal Janani. Thank you. विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर मोना शर्मा महोदय मुख्य अतिथि को पुणी थे आम कृतज्ञता अर्पण करुचु। आज संवर्धित होइथिबा समस्त बंधु मान को आम मंच को अतिथि सहित गोटे दलगत फोटोग्राफ निवेदन करूँ। तेज ता पूर्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एमई एंड आईवी श्री ओम प्रकाश सिंह महोदय को अनुरोध करूँ आनुष्ठानिक धन्यवाद अर्पण पाई। It's my proud privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries on the dais, the award winners, and all the ladies and gentlemen who have participated in this function. First of all, I'm extremely thankful to our ACS ma'am, who despite her busy schedule has come to this function and spoken great words not only to the award winners but to the whole society of the state of Odisha. We are really thankful, madam, for your sparing the time for this function. I am extremely thankful to our PC Chef and Half, Sri S.K. Rath, because of his guidance for organizing this function in a very great manner. And I would also like to tell that he was the brain behind all the details of this function. So I am doubly thankful to our PC Chef and Half, Odisha. Sri Shashi Paul, PC of Wildlife, I am really thankful to you, sir, because of very short notice given to you and you have kindly agreed to attend this function. We are really thankful to you. I am thankful to all the forest officers, the serving officers and the retired officers who have spared time to attend this function and make the function a great success. The award winners and the family members, we are really thankful to you, not only because you came here, but also your presence added to the glitter of this function. So thank you all the family members of the award winners and the award winners themselves. I would like to thank all the members of electronic and print media who have covered this function in a very graceful manner, and I am sure their coverage would go a long way in spreading the message of today's World Forestry Day. For the last about 10 to 15 days, the officers of DFO City Division, DFO Chandaka and RCCF Bhubaneswar, they have been working tirelessly to make this function a grand success. So I must say thanks to all those who are present and who are not present, but because of their tireless work, this function has become a great success. I would also like to thank our officers of PCF office, especially Sunita ji, who has worked really tirelessly for the past so many days, and she was instrumental in making this function a great success. Last but not the least, our anchor, Sri Mrityunjay Sahab, whose presence made a great change and a great thing to this function. So I am also thankful to you. Once again, thanks to one and all. Dhanyavad. Jai Hind. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ओम प्रकाश सिंह महोदय सुंदर धन्यवाद अर्पण पाई आम साधुवाद देउछु एवं आज संवर्धित होइथिबा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे रे अवार्ड विनर्स बंधु मान को आम मंच रे स्वागत करिवु। माननीय अतिथि सहित गोटे दलगत फोटोग्राफ रे से संयुक्त हेबे। ग्रुप फोटोग्राफ्स ऑफ अवार्ड विनर्स विथ द डिग्निटरीज ऑन द डायस। निश्चित रूपे से जो कर्तव्य परायणता रही
एवं जो निरलस सेवा से संपादन कर आसुचंती आम वन संपदर सुरक्षा पाई एवं तार विकास पाई से माने आहुरी अधिक उत्साहित हेबे। आज माननीय अतिथिंकर गरिमामय उपस्थित रे सेमानंकर ये दलगत फोटोग्राफ सेमानंक घरर कांथ को केवल शोभित करिवो नाही बरं सेमानंकर वृत्तिगत जीवन रे आहुरी अनेक किछि प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देव। हृदय सिंधुकरे मध्य साहित्य होई रहिबो जहाँ सेमानंको आहुरी कर्तव्यनिष्ठ हेबा पई प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देव। आमे समस्तंको अभिनंदन जणाउछु माननीय अतिथिंकर गरिमामय उपस्थिति रे सेमानंकर ये उपस्थिति को मध्य आमे अभिवादन जणाउछु एवं सर्वोपरि आज कार्यक्रम को सफल करने दिगरे आपण मानकर जो भली सहयोग रही एवं जो बंधु मानकर विशेष भाव में उपस्थिति रही समस्त को ये सफलतार श्रेय आम प्रदान करुचु एवं लाइव स्ट्रीमिंग माध्यम रे यूट्यूब एवं फेसबुक रे संयुक्त होइथिबा हमर समस्त दर्शक मानक आम साधुवाद देउछु। सर्वोपरि ये सफलतार श्रेय आपण मानक प्रदान करी गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधु को साधुवाद दे जयदेव भवन प्रेक्षालय दायित्व रही समस्त सहयोगी बंधु एवं मंचमंडन करिथिबा समस्त अतिथि को पुणी थे साधुवाद कृतज्ञता दे एक भव्य करताली रे अभिवादन जणाउछु एवं आज कार्यक्रम को आम ये विराम देउछु। वंदे उत्कल जननी।